as I've had a great introduction. Anyway, I'll just repeat. My name is Naveed Mirza, and I'm an award-winning author of this book that was published just recently in Canada, November 2021. And as the topic says, it's faith-empowered leadership. And an Urdu version has just been published in Lahore just a few days back. We had an inauguration, and the title of that book is Pur Yaqeen Qiyadat. So I'd like to just start with, I know most of you are psychology students, and this is a psychology department, I guess, right? So maybe you have a lot of more depth, technical knowledge, and I've just lived life, so I just, through that life, whatever I've experienced, I'll just share some things with you, make it as participative as possible. And hopefully by the end of this 40 minutes, 50-minute interaction, you will get a few ideas, few points, and I think those ideas should really transform you to take you to the next level. So with that, I'd just like to do a little bit of sort of an exercise, some sort of a warm-up in the morning. The degree is good for a job, but then the job may not be there. The boss changes, a lot of changes. So sometimes you start fearing what will happen. And I think the whole life is about how you conquer that fear, right? So you're and I'll get some ideas from you, maybe some deep insights where I may be just going over the surface, but I had a great opportunity to run some programs on leadership which were designed for management leadership, and we did it in Pakistan as well. And then we had a program which was on attitudes alone. So I'll just start today because we don't have too much time, but one area that I would like to cover is internal and external communication, and see what your thoughts are on that and how we can overcome the fear and faith, because the book that I have titled is Faith Empowered Leadership. It's basically personal leadership as well as leadership for other people, taking faith as the core, as the foundation, as the backbone for everything. And that stops most people from doing things. So starting with, I'd just like to, because it wasn't always, life is not always going to be good. And I had my own time. In my student days, I wasn't very confident. I went into a college, cadet college, where there were kids who were older than me, they were more confident. So I never was able to speak on stage. I was always shy, even a few years into professional life. Somehow our profession did not encourage that. As being an engineer, we were always number 2. So, that's another thing. So I have to feel number 1 to be number 1. But it took a while to overcome that. Then there's other things in life, personal challenges. How many think that personal challenges, everyone does have some sort of personal challenges, right? So that's also part of life, how you deal with it. I went through some terrible personal challenges and then job challenges, because as soon as you go outside, I had in Canada, the first job I did, within 6 months, 9 months, the whole economy changed, and I had to just be looking for a job again. Then I got another job that was first job I got based on degree, because nobody cares about degree now. If you want to go abroad and you say, I have this degree, it's just used for signing things, otherwise it has no value. Actually, there's a very split-second difference between, you say, the very rich people, you can say, and who earn their livelihood by performing extraordinary wealth, not through other means that you can get rich quick. So that's what I'm talking about. So now coming to communication, personal skills. So how many think communication is really the key to your life? And what do you think communication is? Anyone? Internal communication, आपकी psychology में, how do you term that? मैं practical point से बात कर रहा हूँ, मैं अब academic बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking of actually being in a sales force, being as a manager, as a leader. Now, how do you transfer your, your inner feelings, right?
I call it in a book, in a program which was very successful all around, it was called Adventures and Attitudes. और वो बहुत सक्सेसफुल पे उसने बहुत लोगों को बहुत लेवल उनकी जो फियर से सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल कर देता है क्योंकि वो आपके इनर जो आप डील करते हैं उससे वो इट्स अ 3-day प्रोग्राम वी रैन एंड व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग दैट प्रोग्राम आई सॉ द डिफरेंस सो यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ यू हैव पॉजिटिव साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी जी है ना तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ विद ऑलरेडी हेल्दी पीपल गुड पीपल एंड मूविंग देम टू द नेक्स्ट लेवल राइट तो वहाँ पे जैसे स्पोर्ट्समैन उनके साथ अब बहुत सी जगहों पे all around they have all kinds of psychologists and people in that field, the trainers, the coaches, they just work with the people, the teams and the different professions, even people who had traumatic incidents during the war, तो उनको भी वो deal करते हैं उससे कि वो already, but a lot of positive stuff, they only use positive psychology. तो internal communication क्या है? काम पे जाते हैं वापस आ जाते हैं रात को खाते पीते हैं सो जाते हैं वो अपनी जो अपने आप को वो नहीं देखते हैं जो उनकी एक ख़ास चीज़ है और वो आपको कैसे कई दफ़ा होता है कि आपको कोई मेंटोर मिल जाता है स्कूल में कॉलेजेस में राइट आप सब ने ऐसा देखा होगा आपकी वो अंदर से आपको पहचानता है वो जानता है आपके में क्या ऐसी चीज़ है जो वो आप नहीं देख सकते हैं मगर वो देख सकता है तो यही और इस तरह बहुत से लोग हैं और मैं वेस्ट में चूँकि मुझे 15-20 साल वहाँ पे रहा हूँ यहाँ भी मैं रहा हूँ somehow there are mentors in academic institutions, they are mentor in jobs, and every one of these successful people that you say who have success stories of a massive level, इनके एक mentor नहीं होता, इनके 10-10 mentor होते हैं, इनका communication के how they want to express themselves वो बहुत important है और उसके बाद उनके financial matters में एक उनका होता है उनके और मामलात पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो हम लोग शेयर नहीं करते हैं दे हैव मेंटर्स एंड दे सीक हेल्प जैसे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो दे हैव मेंटर्स इन एवरी एरिया ताकि वो सब एरियाज़ को साथ लेके चलते हैं वो ना तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन का मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये इतना ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने एनालाइज कैसे कर सकते हैं और मैंने जो सीखा था जब मैंने फर्स्ट टाइम आई गॉट इनटू सेल्स एंड दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग वी आर ऑल सेल्स पीपल है ना डू यू एग्री विद मी और नॉट आप अपने आप को नहीं देखते एज सेल्स पीपल कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ राइट तो आप मैं ये कहता हूँ कि हम सब जो हैं इवन हमारे प्रॉफिट जो थे वो अपने आइडियाज़ को पेश करते थे लेकिन उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई बहुत सालों तक राइट बट ही केप्ट ऑन बिफोर दैट ऑल्सो ही वॉज वर्किंग इन अ कैरावैन उनकी हज़रत खदीजा के एंड ही वुड गो एंड दे वुड बार्टर ट्रेड प्रोडक्ट राइट तो मतलब उस प्रोफेशन में या उसको ऐसा करना हम समझते हैं ये ग्रेडी वाला है या उसको हम वी लुक डाउन अपॉन सम सेल्स प्रोफेशनल पीपल बट बाहर सेल्स प्रोफेशनल इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल एंड यू कैन बी इन एनी इंडस्ट्री डजेंट मैटर यू कैन हैव अ टेक्निकल प्रोडक्ट यू कैन हैव योर ओन सर्विस यू कैन हैव योर ओन वट एवर उसको भी आपने बेचना है आपने लोगों को बताना है आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है मार्केटिंग क्या है सेल्स ये सब वही चीज़ है इंटरनेट पे क्या है आपने सब ने हम वी ऑल वांट टू बी यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ बट वी डोंट वांट टू नाउ स्प्रेड द मैसेज थ्रू ऑफ कोर्स द मीडियम हैज़ चेंज लेकिन आपने उसमें भी आपने कम्युनिकेट करना है और आप देखें कि जो सही जो जिनकी फॉलोइंग बढ़ती है ना आजकल के ज़माने में जहाँ मीडियम चेंज हो गया वो सब उन लोगों से जो उनके लाइक्स होते हैं और जो कमेंट्स देते हैं उनके साथ एक इंडिविजुअल पर्सनल कांटेक्ट करते हैं आपको पता है इस तरह उनकी वो बढ़ती है कुछ तो वो ख़रीदते हैं लेकिन उसके बाद अब आगे कैसे उसको बढ़ाते हैं वो उनके साथ उनके जवाब देते हैं उनके साथ एक रब्ता रखते हैं उनके साथ तो एक वो सेलिंग मीन्स कि आप उनको सुनते हैं हम समझते हैं बोलना ज़्यादा वो है इम्पॉर्टेंट है बट इज़न्ट लिसनिंग मोर इम्पॉर्टेंट तो जब ये सर्वे किया जाता है पूछते हैं लोगों से तो 70-80% से स्पीकिंग बिकॉज स्पीकिंग एबिलिटी लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा हमें लोग कितना खौफ करते हैं स्पीकिंग से ना मतलब कहते हैं कि लोग या डेथ से डरते हैं या वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं सीड वेदर इज थ्रू हिप्नोसिस और थ्रू एनीथिंग वो क्या करते हैं वो आपकी सबकॉन्शियस में आप अब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ बट आई हैव सीन थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ दैट दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड वी हैव डन इट विद आवर पीपल लाइक जो आपके नीचे लोग हैं उनको पॉजिटिव सजेशंस देते हैं हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं बच्चे को भी जो पेरेंट्स को कितना इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट
آپ اس کو کمپیئر کبھی نہیں کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی, ہے نا, اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور تو یہ جو سیلف سجیشن ہے نا, آئی تھنک ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو وین یو ٹاک اباؤٹ پرسنل اسکلز, اٹس اباؤٹ واٹ یو سے ٹو یور سیلف, اسپیشلی ان مومنٹس وین نو بڈی از واچنگ. آپ کیا کرتے ہیں؟ اور دوسرا جو فیتھ کا میں نے بات کی ہے وہ بھی, وین نو بڈی از لوکنگ ایٹ یو, نو بڈی از واچنگ یو, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن, ورکنگ آن دیم سیلوز اینڈ کنٹینیوسلی. یعنی کہ ایک ہر روز آپ اس محفل سے, ایک دوسرے سے مینٹرز ڈھونڈ لیں ایسے جو آپ کو گائیڈ کریں, ہیلپ کریں, نگیٹو کمپنی سے دور رہیں, نگیٹو سجیشن سے دور رہیں, نگیٹو نیوز جو آج کل ہمارے ملک میں ہر وقت مایوسی پھیلائی رکھتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ویری بگ سورس آف نیگیٹیوٹی امانگس. ایک ہے نا, اگری کرتے ہیں نا آپ کہ آج کل ہماری مایوسی کیوں پھیلی ہوئی ہے ہم لوگوں میں, کیونکہ وہ ہر وقت آپ کو ری انفورس کیا جا رہا ہے, حالانکہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. ہم وہ اس پہ کوئی میں کچھ نہیں کرتا. آپ جو کر سکتے ہیں, اب آج کیا کر رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں, رائٹ. اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا سوچوں, تو آپ نے وہ جو ایکسٹرنل نیگیٹو بیریئرز ہیں ان کو کلوز کرنا ہے, ان کو کم کرنا ہے. اور جتنا آپ افیکٹولی کریں گے, اینڈ بی کانشیس, بیکاز یور لائف, بیکاز اٹس ناٹ somebody else's life, your life, and you have control over that life, and especially your thoughts. اور کوئی نہیں کرے گا آپ کے لیے. تو آپ ایسے لوگ ڈھونڈیں, ایسے ان کے ساتھ آپ, یو بلیو اٹ اور ناٹ, یو فائنڈ آؤٹ. somebody other day asked me a question کہ ہم کیسے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں نا ہمیں ہیلپ کریں. آپ, you will not believe, you find somebody, you know this person can help you in your profession or in your positive thinking or in some areas of your life. Seek help. People are there, they want to help. You will not believe how, and then you help people. ایسا ہی ہے نا. تو جب آپ ہیلپ کریں گے تو آپ کو بھی لوگ, آپ کا ایک آٹومیٹکلی ایک, آپ, میں کہتا ہوں, آپ وہ اسپریچول ایک پرنسپل ہے آف ابنڈنس آف تھنگس کمنگ بیک ٹو یو, اس کو لا آف اٹریکشن آپ کہہ لیں. اوور آل آپ کسی کا نیگیٹو تھاٹ کو آپ کیچ کر سکتے ہیں. You can, because it creates that waves. So the first thing is important to work on your negative thinking. And fear جو ہے آپ کو پتہ ہے, fear is also, you want to safeguard yourself. So in certain case fear is good, but then you should not let it control you. آپ کی لائف کو fear کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے.